To tell you about the definition given by AICPA. AICPA has given the best definition in all over the definitions given by anyone. So today you'll see that what is accounting. As I already told you in the previous classes, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. सो एज आई टोल्ड यू, अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज़ करने की, उनको सिग्निफिकेंट मैनर में बहुत अच्छी तरीके से करने में, जो केवल ऐसी ट्रांजैक्शंस हों जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं. उसके बाद वो एक फाइनेंशियल करेक्टर, द सेम मीनिंग ऑफ दैट इट शुड बी अ फाइनेंशियल करेक्टर मीन्स वो हमेशा एक मनी की टर्म्स में होनी चाहिए और उसको हम अच्छी तरह से हमने इसको चेक किया हो ताकि हम दूसरों को कम्युनिकेट कर सकें. I hope you are understanding this definition, children. So this is the best definition which is given by AICPA. Again, I am telling you what do you mean by recording. In recording, actually, we pass some journal entries. In classify, we prepare the ledger accounts, and in summarizing, we prepare trial balance. Okay, and some of the financial accounts also. Financial accounts includes two things which are trading and PL account and the balance sheet. Okay, these two things we actually form in the financial statements. So all of them are included in the accounting, children. Now see the further about the features of accounting. Children, ये सारे features जो अभी आपके सामने mention होने जा रहे हैं, ये सारे features आपको already ये जो definition मैंने आपको बताई है इन सब में mentioned है. See, so accounting is an art as well as science. Art आपको बता दिया है कि उसको हम रिकॉर्ड करें, किस तरीके से क्लासीफाई करें, किस तरह से उसको इंटरप्रिटेशन करें उसका, तो ये सब हमारे एक आर्ट ही है. अगर आर्ट नहीं होगी तो हम उसको ठीक ढंग से उसको रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज नहीं कर पाएंगे. सो हाउ इट इज़ अ साइंस नाउ. साइंस, इफ यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय साइंस. साइंस is a systematic knowledge. Science is a systematic knowledge, means it is an organized study which is given by many of the great people, okay, by the theory and the researches they have given. So the organized form of that study is known as science. So accounting also is systematic knowledge, children. How? Because in the systematic way we prepare all the accounts, and first of all, as you know, the first step we follow, that is for recording. Okay, so step by step we follow, so that's why it is a science. Now recording of financial transaction only, I think it is clear by the name. Financial transactions means ऐसे लेन देन जो केवल फाइनेंशियल में हो. ठीक है, अगर हमने एक मशीनरी परचेज की है तो आपको मनी तो देनी पड़ेगी, बिना मनी के तो आप उसको परचेज भी नहीं कर पाएंगे. व्हाट यू से, इज दैट सो? सो दैट्स वाई, बट नॉट इट शुड बी ओनली एन इवेंट. जैसे कि हमने कोई और कर दिया इवेंट, हमने कहा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होता और कौन सा होता है. देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया बहुत बड़ा, तो उस इवेंट को हम नहीं मेंशन करेंगे. उस इवेंट में जो हमने खर्चे किए हैं, वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है हमारी, उनको उसको ऑर्गेनाइज करने में, वो सारे करेक्टर्स के अंदर लोड किए जाएंगे. सो दैट्स वाई वी रिकॉर्ड ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली. ओके, आफ्टर रिकॉर्डिंग, यू नो दैट इन रिकॉर्डिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी पास सम जनरल एंट्रीज एंड आफ्टरवर्ड्स इन क्लासीफाइंग. चिल्ड्रन, इन क्लासीफाइंग first of all we need to prepare some ledger accounts. I already told you there are three types of accounts which you learn afterwards. The first one is real, personal and the nominal accounts. Okay, in such a way we classify all the financial transactions from the recording. Afterwards, summarizing all the accounts which we have prepared in the financial year, okay, it should be an inclusion in somewhere else. What do you say? But otherwise it is so difficult to us कि how will understand कि how many accounts we have. It is very difficult to see different account is formed. So that's why we prepare a summary of that. That summary is known as trial balance. Okay, trial balance, by which we can see all the accounts inclusion in it. Okay, by the trial balance also we can understand what actually mistakes we have committed. Okay, so trial balance, that's why it is formed. Now children, interpretation means we have to check कि whether all the journal entries and the ledger accounts which are prepared, it is correct or not. So for that reason, children, we need to prepare the balance sheet. Balance sheet has two sides. First one is, you know, that liability side, and second one is asset side. And the liability and the asset side should be equal always. Okay, on the left side we write actually all the liabilities, and on the right side assets.
So more than that, you will understand the next chapters. Okay. So interpretation means checking, okay, analyzing, by which we can pay the taxes. Okay, we can assess the taxes. Okay, how much we have to pay. Afterward, children, communication. It is the most important features that we should communicate. Okay, whatsoever we have prepared the accounts. Okay, we need to communicate in the locality, in the industries, for what? By which they can invest in our company. Understanding? Now, children, see about the objectives accounting, children. Objectives is what? This is also the most important thing. But first of all, you should know what do you mean by objectives. Okay, do you have an idea? Think about it. Guessing? So see, I am telling you actually what is meant by objectives, children. Children, suppose you are studying in the class. Okay, you have some goals in the mind. So that goal means, suppose you want to succeed with the 85% marks on someone else. Okay, so what you should do to achieve that goal? You should do some that some planning you need to do. So that utility or the planning is known as objectives. Clear? So see, so what is that objectives are? I am going to discuss with you. Number one is to keep systematic record of the business transactions. चिल्ड्रन, हमारे को सबसे पहले जो हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन किए हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ओके, तो ये सब हमारी क्या है, ये हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि हमारे को कभी भी पता लगे कि हमने इस डेट को ये चीज़ परचेज की थी, तो फटाफट उसका जो है हमारे पास क्लिक हो जाए माइंड में. एंड द नेक्स्ट वन इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. ओके, सेकेंड यूटिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इज व्हाट, कि हाउ कैन वी कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. ओके, नाउ third thing, to know the exact reason leading to net profit or not net loss. Children, you must be that surprised that with accounting we can also ascertain, we can know also the reason ki why we are suffering a loss, okay, by which we are earning a profit. You can understand easily with the accounting. Okay, to ascertain the financial position of the business. Children, financial position means दैट हमारा जो बिज़नेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चल रही है, हमारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, हमें भी लोगों को कितना पैसा देना है. ओके, और हमने जो बिज़नेस इंप्लीमेंट किया हुआ है उसके अंदर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये पता लगाने के लिए भी हम जो है अकाउंटिंग करते हैं. ओके चिल्ड्रन, बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट वी कैन नो कि वी आर अर्निंग अ प्रॉफिट और वी आर लॉसिंग. अंडरस्टैंडिंग? सो सी द नेक्स्ट वन इज टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर. अब हम अलग अलग साल में अगर हम चाहते हैं भाई हमने कितनी प्रोग्रेस की है, हमने कितना अर्न किया है, या फिर हम घाटे में तो नहीं चल रहे हैं, तो इसका भी हम पता लगा सकते हैं किससे, हर ईयर में, ईयर आफ्टर ईयर, बाय अकाउंटिंग प्रोसेस. ओके, मोर देन दैट यू विल अंडरस्टैंड द नेक्स्ट चैप्टर्स कि हाउ कैन यू अंडरस्टैंड, बिकॉज दे आर मैनी ऑफ द प्रिंसिपल, मैनी ऑफ द थीसिस, ओके, बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स. सी, आपको तो ये तो पता ही होगा कि लोग टैक्स ही बहुत चोरी करते हैं, है ना, धोखाधड़ी करते हैं हमारे साथ. You must be knowing, surprised that, na? No, it is just a reality, children. Many of the people are frauding with the state, with the government, okay, by which saving its taxes. Okay, how? With the accountant. Accountant जो है हमारी अर्निंग को कम दिखा करके या ज़्यादा दिखा करके, ठीक है ना, अगर कम दिखाएगा तो हमारे को कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इस वजह से जो है वो बच सकता है. लेकिन ये अकाउंटिंग ऐसी चीज़ है कि वो बच नहीं सकता अगर उसने फ्रॉड कर रखा है तो. ओके, क्लियर? Proper taxation, proper auditing. Okay, now the next is to provide information to various parties. अब चिल्ड्रन, हमने अगर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, है ना, उनको तो पता लगना ही चाहिए भाई हमने अपने जो है कुछ मनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है आपके बिजनेस में, तो उनको इतना तो राइट है ना कि भाई वो जो है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है, हमारी जो बिजनेस फर्म है वो सही चल रही नहीं चल रही है ना, कि वो घाटे में तो नहीं चल रही, वो नहीं तो वो फटाफट अपना पैसा उठा लेंगे. तो इसीलिए उनको भी इस चीज़ की जरूरत पड़ती है अकाउंटिंग की. ठीक है, तो ये उनको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टैंड, यू एंजॉय द क्लासेस टुडे चिल्ड्रन. ओके, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन प्लीज पास द कमेंट, एंड इफ यू लाइक द वीडियोज प्लीज लाइक इट. ओके, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ओके, इफ यू डोंट लाइक यू कैन ऑल्सो अनलाइक द वीडियोज. ओके, एज यू प्रेफर. थैंक यू so much for the patience and for listening my views.